Hello, students. A very, very warm welcome to all my amazing students in the class. Hope you all are fine. Hope you all are doing well. Hope ये जो लॉकडाउन पीरियड है आई नो सबके लिए मुश्किल है but I know there are so many ways जिससे आप इससे बहुत अच्छे तरीके से cope up कर सकते हो. Vedantu team is here. We are trying our level best to give you quality education as well as all the motivation required. Do follow all the videos of motivation as well as all the videos of subject related videos obviously. तो अगर follow करते रहोगे and I know you will feel a bit positive change in your life. So keep following all the path which we will show, being your teachers क्योंकि teachers has experienced that yeah, life is not that easy, but when we follow it and when we live it thoroughly, there's always a way. There's always a good way to live it fully. Okay. On this note, students, enough of motivation. I am Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu, and this is a very important session of your topic, chemical bonding. I know you must be waiting. I know कभी कभी issue हो जाता है, but students can understand it. Students, लॉकडाउन सबके लिए मुश्किल है as well as your teachers. तो थोड़ा सा adjust कर लेते हैं, right? So what ma'am is going to teach you in this session, ICSE 10th class. This session is about covalent bonding. मैम बहुत डिटेल से पढ़ाएगी that what is covalent bonding. Okay? So on this happy note, shall we start the session? Do say a yes in the comment box and in the chat box as well. Keep chatting and be available, give your response and rock it, right? So students, Vedantu Pro subscription एक course है and I really want to tell you about the same. ये है लिंक. अगर लिंक को फॉलो करोगे फायदा क्या होगा that there is a course called as Pro subscription और आप वेदांतु का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जैसे Amazon और Netflix और जितने भी सोशल साइट्स होती हैं जितने भी आपकी ये साइट्स है जिसके थ्रू आप ऑल द वेब कंटेंट इज अवेलेबल उसी तरीके से प्रो सब्सक्रिप्शन है एक आई गेस 1 मंथ सब्सक्रिप्शन या कि आपको जो चैप्टर पढ़ना है जिस चैप्टर में इशू है मे बी दैट्स फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एसएसटी इंग्लिश सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द लाइव क्लासेस एज वेल एज ऑल द माइक्रो कोर्सेज एंड यू कैन चूज योर ओन शेड्यूल ऑल्सो ऐसा नहीं कि मैम आज तो मुझे एसएसटी पढ़ने का मन था इन केमिस्ट्री एंड कल मैं इंग्लिश और फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ और चाहती हूँ सो यू कैन मैनेज योर शेड्यूल एज वेल सो व्हाई नॉट गिविंग इट अ ट्राई स्टूडेंट्स तो ये सिर्फ 2699 का होगा इफ यूल अप्लाई द कोड AGPRO तो वेट किस बात का अप्लाई करो कम टू वेदांतु अ प्लेटफॉर्म एंड फॉल इन लव with our platform with all the live classes and happy learning students okay because you can select your 10th class CBSE ICSE Maharashtra board NCERT all of you can enroll for different courses सब्सक्रिप्शन लो उसके बाद सब पर्सनलाइज्ड आपके लिए सिर्फ आपके लिए ओके ऑल द टेस्ट सीरीज असाइनमेंट लॉन्ग टर्म एंड चैप्टर रिलेटेड माइक्रो कोर्सेज आल्सो ओके एज आई टोल्ड यू सो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑसम जर्नी जो पूरा का पूरा इसका फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा यू कैन फॉलो इट कंप्लीटली यू विल गेट द कोड यू कैन कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा ओके स्टूडेंट्स सो एज आई टोल्ड यू क्या सीखेंगे आज covalent bonding, different types of covalent bonding in detail. So, my lovely students, you must be thinking, ma'am, start the class. So, I will not let you wait for more time and let's begin the journey. Let's rock the session. All right, students? Chalo. क्या बताया मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन how different atom combine with each other and if you have seen the previous session तो बहुत अच्छी बात है अगर अभी तक नहीं देखा है so session 1 is already done my lovely students please do watch session 1 that was about how elements combine why they combine and everything about ionic bonding okay so do follow it क्योंकि ये session 2 है of the same chapter जिसमें मैम आपको बताएंगी that how one part is this that complete transfer of one or more electrons that we did in the previous session that was about your ionic bonding that how
Suppose I have an A atom, it is having an extra electron, B bechara deficient of electron, and how the complete transfer of electron occurs. And when the complete transfer occurs, अच्छा एक electron जाता है तो half arrow show करते हो, not complete arrow. All right, I can write it and rub it for you also. तो ये हमने rub किया, फिर से देखते हैं इसको. तो ये क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज किया पॉजिटिव, बी ने गेन किया. सो दिस काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इज आयोनिक बॉन्डिंग ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ आयॉन्स. There is electrostatic force of attraction between it, results into ionic ions के बीच की bonding. Okay, very strong. We talked about it thoroughly in the previous session. That is done and done. So do watch it. Next is about sharing of electron. It's like two best friends and they are like, okay, chemistry भी यही सिखाती है students. Being best friends of each other believes in sharing. So students do believe in sharing. Sharing is caring, and that's what we'll learn today. That how even atom believes in sharing their electrons. Okay, तो वही है covalent bonding. Covalent, co word itself means sharing. Okay, valent, valency. जिसमें they are satisfying their valency, they are getting stability by sharing each other's electrons. Okay, तो पढ़ने को तैयार हो. There is two type of covalent bonding. एक normal जिसमें हम करते हैं mutual sharing of electrons. Mutual sharing मतलब दोनों believe करेंगे. It's like this is friend A, this is friend B. Suppose one is Anubha and one is anyone out of you, and ma'am has 100 rupees, you also have 100 rupees, you're looking at each other. Okay, we want this wrap and ये आता है 200 में, दोनों को भूख लगी है, क्या करें? Let's share each other 100 rupees. We'll get the wrap and we'll share it. Sharing is caring, है ना? This is like mutual sharing, दोनों sharing कर रहे हैं. There is one more type of sharing that we are going to study next class. So next class भी miss नहीं करनी है. Coordinate covalent bonding, a special type of covalent bonding जिसमें मैम के पास 200 rupees है, आपके पास कुछ नहीं है, but मैम is like कि अच्छा, you are also my friend, I also believe in sharing and giving approach. तो इसमें ए क्या कर रहा है, अनुभा मैम क्या कर रही है, अनुभा मैम is like, don't worry B, I have electron, no, we both will manage with that. So it will share its electron completely to its B, but ये A अपने पास पे रखेगा. And ma'am is like, देख, I'm sharing my burger with you, but that was still mine. Okay, I got it. So in that way, these electron belongs to A, but it is shared to B also. तो ये mutual sharing नहीं है, sharing from one atom which will completely share its electron to the B. ओके, तो दो टाइप की शेयरिंग है. इस क्लास में हम सिर्फ एक टाइप की शेयरिंग पढ़ेंगे, दैट इज मोर ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग. ओके, सो रेडी टू नो मोर एंड मोर अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग? आई नो यू नो इट एंड आई नो यू आर सुपर रेडी. तो स्टूडेंट्स, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. जरा ये पूरा का पूरा फाइल यू कैन डाउनलोड इट, सो डोंट मिस इट, जस्ट डाउनलोड इट. The bond formed between two atoms. Suppose I'm having this chlorine, I am having this chlorine, and the atom must be electron deficient. Do remember it. Okay, they are like, हम दोनों को जरूरत है ना, और जरूरत पूरी करने के लिए क्या करें? Let's believe in sharing. So if you know, chlorine has 7 valence electron. Lewis dot structure, if you remember from previous class also, I can write the valence electron of chlorine in form of dot or cross by writing its symbol. So ये मैम ने draw किए 7 electron of chlorine. Let's just take another color and pretty much, yeah, हाँ, अब ये 7 electrons is chlorine के. Okay, so both of the chlorine, see, we are best friends, we have so much similarity, why can't we share each other's electron to get stability? Stability means having 8 electrons, octet rule must followed. तो ये 7 electron वाला chlorine क्या करेगा, ये बोलेगा दूसरे chlorine को, let's just share your 1 electron with me, and that it is a mutual sharing. This chlorine is like, I'm sharing 1, you also share 1, equal sharing, and we both will be benefited. So this chlorine will also share its 1 electron. What ma'am is doing by making these big rounds, these are called as electron cloud. The cloud this in which electrons are present of one particular element or atom.
ये जो सर्कल है ये ड्रॉ कर रहा है कि क्लोरीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसके वैलेंस शेल में उसका क्लाउड है। क्लाउड मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं एंड मेकिंग दिस क्लाउड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, same with this chlorine, Da7 electron and sharing this one electron, they are rotating in that area making a cloud kind of a structure. Okay, they are sharing each other's electron, दोनों ने mutual sharing की। और कितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की टोटल स्टूडेंट्स? 2 इलेक्ट्रॉन की। whenever 2 electrons are shared between the two atoms, this is kind of a single covalent bond. That kind of a covalent bond that is made up of two electrons. Two electrons combine to make a single covalent bond between two atoms. So two chlorines are going to get combined by having a single covalent bond, and that we can represent by marking a dash line between atom. Yaad rakhna, this dash line is not at all is going to be used in case of ionic bond. Okay, samajh aaya students that how sharing of electron happens? Yeah, we have so many examples we can discuss one by one. तो देखो कुछ important points पढ़ते हैं। पहली बात कि मैम, okay, now we know, I am having a bit of idea that how covalent bonding occurs, but do we have some condition? Can we just look at the compound and can judge whether they are making covalent bonding or not? So yes, students, you can definitely judge. वो कैसे है? That generally non-metals combine to make covalent bond, and non-metal को कैसे पहचानोगे? Generally they have 5, 6, 7 valence electron. 8 also kind of the category of non-metal, but अगर 8 electron है, why will they combine? They will also follow, they are also following octet rule, है ना? वो तो पहले ही octet rule follow कर रहे हैं. So why they have to lose gain or share their electron to combine with the other atom? They are like, we are loner, just like helium, neon, argon. They are loner. They believe in के हम अकेले ही अच्छे हैं. Okay? But non-metals having 5, 6 valence electron, they do believe in mutual kind of a sharing. They need the electron, so other non-metal will also need the electron. दोनों को जरूरत है, तो क्या करें? They are like कि दोनों का जरूरत है, let's come to a point and let's share each other's electron. Okay? Though we have certain exception also, कि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं स्टूडेंट्स, जरा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन. मैम, neither it is having 5 nor 6 nor 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करें? तो कुछ एक्सेप्शन भी है. हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, but they are having 1 valence electron as well as 4 valence electron. So chemistry can be full of this exception also. Do understand it? Okay, तो exception नहीं कहूंगी. Most of the properties of non-metal which you know from 9th class and 8th class itself. तो हाइड्रोजन कैसे कंबाइन करेगा स्टूडेंट्स? अगेन द सेम, 1 hydrogen, 2 hydrogen, and if I talk about hydrogen, hydrogen gets stability by making its octet or duplet complete. As hydrogen is having only 1 shell, है ना, इसके पास सिर्फ एक शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है. So this will tell to the other hydrogen, hey dude, can you share your 1 electron with me? I will be super stable because I will be having 2 electrons now. समझ आया? तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन से, एंड दिस हाइड्रोजन आई बिलीव्स इन म्यूचुअल शेयरिंग. ओके, म्यूचुअल होना चाहिए सब कुछ. तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एंड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन बिटवीन देम is basically 2, and 2 electrons shared, that is a single covalent bond. Okay, so इस तरीके से there are different type of covalent bonding, single, double and triple covalent bonding. Ma'am will tell about it one by one. All right, students. So I hope this is clear that carbon hydrogen is a kind of exception. Generally, non-metal is having 5, 6 or 7 valence electron. देखो कितना amazing हमने GIF डाला है, that how electrons are combining and making molecules. Look at the hydrogen. Hydrogen 1 electron shared combined to give H2 molecule. All right, same with chlorine. I already told you 1 chlorine 7 valence electron, 7 valence electron, दोनों एक electron share कर रहे हैं. 8 to 8 valence electron, they are getting stability. Let's talk about the carbon now. Carbon is having 4 valence electron. Carbon का configuration is this, if you do remember. 4 valence electron, अब 4 hydrogen इसकी तरफ आए, and चारों hydrogen is like
carbon, we need one electron. Will you help us? So hydrogen and carbon is always such a humble element. Carbon is like, see, I really believes in this friendship of ours. Let's share electron. What is so harm in that? Okay. So this carbon having four valence electron share its one electron to each and every hydrogen. अब हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके दो इलेक्ट्रॉन हुए. Every hydrogen is getting stability here, and carbon has four electron. Now they will, as I told you, mutual sharing. This carbon is also sharing four electron of these four hydrogen. अब इसका देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 and 4 of hydrogen, 8 electron stability. So carbon is also stable, and every hydrogen is stable by making single covalent bond. Okay, so it's like carbon is attaching to 4 hydrogen with single covalent bond, 4 single covalent bond. Look at the structure of water. The water we drink in our day-to-day life is a covalent compound. Such a new information, hopefully new. So oxygen, if you do remember, is having 6 valence electron. If it will share 2 more electron with other atom, it will be like 8 unstable. So 2 hydrogen is coming to this oxygen, and every hydrogen, hey oxygen, see, we love you. Please share your one electron now. Please, हम bargain कर लेते हैं थोड़ा. So every hydrogen is sharing one electron from oxygen and getting stability. क्योंकि hydrogen बेचारा 2 electron में stable हो जाता है. One shell having 2 electron stability. And oxygen थोड़ा सा like मेरे पास 6 है. You share your one electron also, because I believe in equality. So oxygen attaching with 2 hydrogen and making single covalent bond, those single covalent bond, this is your structure of water. That is H2O. You can also call it HOH. Okay. I hope this point is clear, that how covalent bond formed, because ma'am is going to tell you the different types of covalent bond also. So tell me in the chat box, ma'am समझ आ रहा है, and it seems very easy और बहुत मजा भी आ रहा है. Right students? I hope अब कोवेलेंट बॉन्ड का जो सिंगल टाइप है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है ना. When only one pair of electron is shared between the 2 atoms, that develop a single covalent bond. And I told you so many examples: hydrogen, chlorine, even water, CH4, all of it is having single kind of a bond, and we did that in detail. देखो ये सुंदर सा GIF जो हमने डाला है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन, दैट हाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट. दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की तरफ आए, शेयरिंग one इलेक्ट्रॉन ऑफ इटसेल्फ, एंड 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास. A duplet is complete, and they are so stable. Okay, isn't it nice? Yeah, tell me. Wonderful, very nice, isn't it? These examples are super clear because ma'am ने तो explain किया ना detail में. All right, if you find any issue, do let me know, क्योंकि हम एक doubt session भी लेते हैं when the chapter is complete. So don't miss out with any kind of your doubts. Okay, wonderful, and I hope you have hit the like button already. अगर नहीं किया है तो कर दो, and subscribe भी करो और friends के साथ share भी करो, so that they can also come and can see that study and curriculum subject of chemistry can also be interesting. All right. तो ठीक है, अब सिंगल तो क्लियर है मैम, डबल में क्या होगा? Nothing like a rocket science. Single covalent bond is sharing a 1 electron pair, that is 2 electron. Double covalent bond is basically sharing of 2 electron pair, मतलब in total 4 electrons are shared between 2 atoms. Okay, 2 pair of electron का मतलब क्या हो गया? 1 pair is 2 electron, right? 4 electrons are shared between 2 atoms. Suppose this is A, this is B. इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे, एंड दे विल गेट स्टेबिलिटी. अब होगा कैसे? लेट मी जस्ट टेल यू सम एग्जांपल. लेट मी क्लियर द स्पेस. हाँ, जरा देखो मैम ये क्या हो गया. तो घबराना नहीं है, ये क्या हुआ मैम बताएंगी. दैट हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेकिंग अ बॉन्ड. जस्ट सी दिस इफ यू आर एबल टू गेट इट. कैसे बना? ये 2 ऑक्सीजन थे, देखो ये कैसे डबल बॉन्ड बना रहे हैं. डबल बॉन्ड का मतलब डबल कोवेलेंट का मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. कैसे हुआ? अभी बताते हैं कैसे हुआ.
एक एग्जाम्पल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, बट उससे पहले एक इजी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं. ओके, ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, यू डू रिमेंबर इट इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो. 1 2 3 4 5 6. दूसरा ऑक्सीजन, फॉर द sake of differentiation, I am writing cross at one time and dot at the other time. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस ऑक्सीजन, एंड ट्राई टू राइट इट ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एटम, ताकि आप बॉन्डिंग दिखा सको, एंड द डायग्राम विल ऑल्सो लुक अ बिट नीट एंड क्लीन. तो ये बातों को भी ध्यान में रखना है. Oxygen is like, hey oxygen, we are friends, no? Can you share your 2 electron with me? And this oxygen happily sharing its 2 electron, but will demand the same to this oxygen. Hey oxygen, I believe in mutual sharing, and that's how we will care for each other. So you have to share your 2 electron with me also. अब ये cloud देखो, 6 of this oxygen, 2 it has shared, 8 electron. This cloud, 6 of itself, 2 of this oxygen shared 8 electron. दोनों स्टेबल हो गए, राइट? अब जब दोनों स्टेबल हो रहे हैं, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन बिटवीन इट? 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज मेकिंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड, बट उसको 2 कोवेलेंट बॉन्ड का क्या नाम है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड. So oxygen combined with the other oxygen with double covalent bond. Okay, double covalent bond. अब CO2 को कैसे ड्रॉ करोगे? अगेन आई टोल्ड यू, मुश्किल नहीं है, बट कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स? एनी आइडिया, एनी आइडिया? ऑल द आइडियाज आर वेलकम्ड. तो एक ऑक्सीजन के साथ, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है. लेट्स ट्राई टू राइट इट ब्यूटिफुली एंड नीटली, क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है एग्जाम में. मैंने ये ड्रॉ किया. आई टोल्ड यू लेफ्ट और राइट साइड पे लिखो दोनों के, सो दैट यू कैन शो बॉन्डिंग. जैसे कि ये ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, इट हैज टू शेयर 2 इलेक्ट्रॉन. तो 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड जरूर लिखना है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने हैं दूसरे के साथ टू अचीव स्टेबिलिटी. सेम विद दिस ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन लिखो इस साइड में, सो दैट दे कैन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन विद कार्बन फॉर द स्टेबिलिटी. अब अदर लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल लुक सो क्लमसी. अब ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके साथ क्या होगा? इट्स लाइक आई हैव 4 इलेक्ट्रॉन, 2 here बिकॉज सिमेट्री. एक ऑक्सीजन हियर, एक ऑक्सीजन हियर. And what will they do? Let's try to make it more and more beautiful by using different color. ये कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा? ऑक्सीजन इज लाइक, कार्बन you are so friendly, please share your 2 electron with me, I'll be stable. This oxygen, please share your 2 electron will be, I will be super stable. अब ये carbon is like, carbon is also very चालू plus friendly. Carbon is telling कि देखो, you also have to share your electron, same electron that I have shared with you. तो कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 क्योंकि इस ऑक्सीजन ने लिए, 2 ये यहाँ से शेयर करेगा, 2 क्योंकि इस ऑक्सीजन ने शेयर किया, 2 इसके ये यहाँ से शेयर करेगा. Are you getting the point? एंड देखो डायग्राम कितना नीट लग रहा है, होपफुली, है ना? तो हुआ क्या बच्चा लोग, ये कार्बन, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक डबल बॉन्ड बनाया इन टोटल. ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाया टोटल. सो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन देम इज 4. यू कैन सी दैट क्लियरली. तो ये CO2 का स्ट्रक्चर कितनी इजीली बन गया. तो लेट मी नो, समझ आया? आसान था? दैट इज नॉट एट ऑल मुश्किल. होपफुली मुश्किल नहीं लगा. ओके, as I told you, ये पूरा का पूरा फाइल डाउनलोड कर सकते हो. That how double bond is also formed between different atoms. तो I guess अब triple covalent bond बहुत easy लगेगा. Just tell me in the comment section. I told you single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond क्या होगा? Single में 2 electron shared, double में 4 electron shared, and triple में yes, you got it right. ट्रिपल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन पेयर. मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 6. बहुत इजी है, इस एग्जांपल को करते हैं. 2 नाइट्रोजन एटम, यू नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2,5, राइट? आई होप नो डाउट इन दैट. तो हमें वेट नहीं करना, ट्राई करो. 5 इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, राइट? So write 3 electron on this side, so that you can easily show the kind of
kind of bonding with the neat diagram. 3 on this side, 2 on this side. For the sake of difference, you can use cross also. अब क्या होगा? नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करो नाइट्रोजन, ये भी बोल रहा है सेम इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग, शेयर करो ना, वी विल अचीव स्टेबिलिटी. अब शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयरिंग से क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड एंड तीन बॉन्ड. This nitrogen combined with the another nitrogen and making 3, that is called as triple covalent bond. Never pronounce it as 3 covalent bond. This is a triple covalent bond, okay, between two atoms. And you can show it like this also, N triple bond N. एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, एक यहाँ है, और अगर नहीं भी दिखाओ then also it's totally fine. Hope you got it बच्चा लोग. Easy है, समझ आया? ठीक है, इसी तरीके से यू कैन ड्रॉ मोर एंड मोर स्ट्रक्चर. HCN. अब ये HCN क्या है? अगेन वेरी इजी स्टूडेंट्स. आई रोट हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन साइनाइड, वेरी पॉइजनस सब्सटेंस. इतना पॉइजनस होता है कि उसको जीभ पे रख के थोड़े टाइम बाद ही लाइक द पर्सन इज लाइक भगवान को प्यारा हो गया. ठीक है, सो वेरी पॉइजनस एंड एक्रिड टेस्ट इट इज हैविंग. तो देखो नाइट्रोजन अगेन कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन. कार्बन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन. 5 को 3 शेयर करना है, तो इधर कार्बन के सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं और एक इस साइड शो करो. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन. अब ये काम आपको समझ आ गया ना, एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू नाउ, एवरीथिंग विल बी इजी. हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू अचीव स्टेबिलिटी. नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू अचीव स्टेबिलिटी, मीन्स ऑक्टेट रूल. तो अब कार्बन क्या करेगा? इक्वल बिलीव इन शेयरिंग. नाइट्रोजन तूने मेरे 3 शेयर किए, मैं भी तेरे 3 शेयर करूंगा. तो 4 ऑफ इटसेल्फ, 3 ऑफ नाइट्रोजन 7 एंड 1 ऑफ दिस हाइड्रोजन. मतलब जो भी एडजेसेंट एटम कंबाइन होते हैं उससे दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन. देयर देखो डायग्राम देखो, कंप्लीट हो गया एंड एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड इज स्टेबल हियर. हाइड्रोजन शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल. कार्बन 4 खुद के, 3 7 and 1 8, 8 electron stable. नाइट्रोजन 5 खुद के, 3 from carbon stable. Stability achieve. अब देखो 1 2 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे का ऐसे है. तो देखो नाइट्रोजन विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 ट्रिपल बॉन्ड विद अ कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद अ हाइड्रोजन. That is a structure of hydrogen cyanide. This we have already done. ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट. इतना ही तो था, इतना इजी था वो. ठीक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं था. अब what if I say covalent bonding on the contrary of their single, double or triple bond? There is one more type which you can define the different type of covalent bonding. वो क्या है? Difference in the atom involved and their electronegativity. जो भी atom involved है for making a covalent bond, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दैट ऑल्सो मेक्स अ वेरी मच डिफरेंस. कैसे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहली बात क्या होती है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, दे विल मेक अ बॉन्ड. हाइड्रोजन का खुद का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं खुद के, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यू डू रिमेंबर इट, है ना? कोई मिस्टेक नहीं करनी है. हाइड्रोजन ने शेयर किया इलेक्ट्रॉन स्टेबल, फ्लोरीन ने शेयर किया स्टेबल 2, इसके पास स्टेबल 8, इसके पास स्टेबल, मेकिंग अ सिंगल बॉन्ड, है ना? अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन थे और फ्लोरीन के साथ आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग बना ली. अब ये यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? ये जो फ्लोरीन है that is pretty electronegative, means it has a very strong affection towards electron, and this is telling कि मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ एंड आई विल बिलीव कि मेरा न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इवन इफ आई एम एसोसिएटेड विद अ बॉन्ड. तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, दिस विल बी मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन देन दी हाइड्रोजन, एंड इट विल बी लाइक दिस. इस तरीके से देख रहे हो, मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन, लेस टुवर्ड्स हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन से दूर जा रहा है, it is kind of developing a positive charge. What is this? This sign is called as delta. Delta means small positive, not like ionic compound जहाँ पे proper positive and proper negative charge associate होता है. This is slight positive charge because shifting of electron a bit, not complete transfer. और ये इसकी तरफ आ रहे slight negative charge. Okay, this is developing a slight negative charge because electrons are approaching. Negative charges
अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट। तो मेरा जो कोवलेंट बॉन्ड था, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि एक एटम अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल attract the electron pairs. Such kind of covalent bonding due to this difference in electronegativity has a new name, polar covalent compound. पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या है स्टूडेंट्स? पोलर मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब चार्ज सेपरेशन। दे गॉट टू पोल्स, आप इसको डाइपोल भी बोल सकते हो, डाई मतलब टू। आई गॉट टू पोल्स ऑफ चार्ज सेपरेशन, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। दीज आर कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड्स। एंड इवन कोवेलेंट कंपाउंड जो हमें लगता ही नहीं था दैट इज एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ अ चार्ज, अंडर स्पेशल केस दे कैन ऑल्सो डेवलप चार्ज। समझ आया? दे कैन ऑल्सो डेवलप चार्ज। कोई बात नहीं, मैम एग्जाम्पल कराएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू इज 1.9 और ग्रेटर देन दैट इज अ मोर ऑफ लाइक अ आयोनिक बॉन्डिंग। बहुत ज्यादा डिफरेंस में तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के? सपोज मैंने ले लिया सोडियम एंड मैंने ले लिया फ्लोरीन, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, 1.9 एंड ग्रेटर देन दैट, तो उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज इनफ so that they can develop a slight positive and negative charge under certain condition, not in every condition. और अगर ऐसा हो गया तो they will get a कोवेलेंट कंपाउंड। कौन सा? पोलर कोवेलेंट। उसमें भी स्पेशल केस है, वी विल गेट बैक टू इट। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट अ वैल्यू, एक स्केल ले लिया हमने 0 से 4 तक का। 0 मतलब मिनिमम, 4 मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम टेंडेंसी। तो ये अब देखो, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन ड्रॉ करूं, दिस इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड्स कार्बन, but electronegativity difference is very low, 0.3, which is minimum। तो ये जो kind of bond होगा ये non polar होगा। यहाँ पे opposite students non polar, no polarity, no charge separation, difference बहुत कम है ना? ठीक है, ये बात क्लियर हुई मतलब। तो polar covalent bond is clear when the two atom of different electronegativity difference is lesser than 1.9 but greater than at least 0.6, 0.9 तो होना चाहिए। ओके, तो ऐसे बॉन्ड होते हैं पोलर कोवेलेंट। आई टोल्ड यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड यू कैन सी इट विद दिस ब्यूटीफुल GIF अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये और ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। व्हेन यू सी द डायग्राम्स, व्हेन यू सी द वीडियोज, when you see a picture, that will give you more and more storage of your memory, वो ज्यादा जल्दी स्टोर होता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन की तरफ बढ़ा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अटैच करने थे इसके। तो ये जैसे ही अप्रोच कर रहा है, देखो इसके इलेक्ट्रॉन इज मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। ये हाइड्रोजन था, ये उसका इलेक्ट्रॉन था एक, ये आया इस मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन। फ्लोरीन ने स्लाइट नेगेटिव चार्ज जनरेट किया और हाइड्रोजन ने स्लाइट पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया। And this is more of like a polar bond. And did you ever thought of the same thing that your water is also a polar covalent compound? Polar covalent. ये देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये वाटर था। अब अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बात करूं, ऑक्सीजन इज प्रेटी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, ये अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन से। तो देखो इसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं इस डाइपोल की। डाइपोल मतलब 2 पोल्स हैविंग अ चार्ज सेपरेशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो एरो का जो हेड होता है दैट इज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एरो का जो टेल होता है दैट इज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव काइंड ऑफ। तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की। ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस, और ये भी इसी तरफ होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये किस तरीके का कंपाउंड है स्टूडेंट्स? दैट्स अ पोलर, पोलैरिटी इज जनरेटेड, चार्ज सेपरेशन इज जनरेटेड। ये भी इधर चार्ज जनरेट कर रहा है, ये बहुत नेगेटिव ये बहुत पॉजिटिव। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बट ओनली ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओनली ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, you can accept about different kind of example, practice करना, practice will make it more and more clear। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात क्लियर है व्हाट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो नॉन पोलर एज द नेम इज सजेस्टिंग द आंसर, अब तो समझ आना चाहिए। नॉन पोलर इज समथिंग विच इज ऑपोजिट टू इट, राइट? तो नॉन पोलर, नो पोलैरिटी, नो पोलैरिटी मतलब नो चार्ज सेपरेशन।
तो जब दो एटम जो अटैच हुए वो ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, then that kind of a substance is non polar. Example अब समझ आ रहा होगा, when both the atom is same, when both the atom is same, they are non polar. Are you able to understand this? They all are non polar. क्योंकि सेम एटम है तो डिफरेंस कैसे हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? डिफरेंस मतलब जैसे मान लो एक है 2.1, दूसरा है 4, देयर इज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यहाँ तो दोनों का सेम है ना, 2.1 2.1 और आइदर 2.2 4.0 4.0 सेम है, तो नो चार्ज सेपरेशन, नो पोलैरिटी, सो दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स. गॉट इट? तो बच्चा लोग ये बहुत सारे एग्जाम्पल थे. जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मैम समझ आ गया, कितना इजी था. नाउ इट इज हैविंग मोर एंड मोर क्लैरिटी. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है स्टूडेंट्स कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे, व्हाट आर द मेन कंडीशन फॉर द सेम. तो पहला है, एज यू नो, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मतलब आपको पता है कि नॉन मेटल इज समथिंग दैट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की क्यों होती है? बिकॉज non-metal believes in attracting the electron, है ना. तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगी, सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड, more and more electronegative, more and more acceptance of electron towards itself. ठीक है, दोनों एटम का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है नॉन मेटल का. अगर मैं मेटल की बात करूं, दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे डोंट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ वांटेड टू एक्सेप्ट बट दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, so they are more of like sharing of electron. So do remember this point. Second point क्या है बच्चा लोग? Second point है both the atoms should have high electron affinity. This concept we know from the previous chapter. अगर उसके videos भी नहीं देखने, if you're new to Vedantu, do watch. You will get the playlist on Vedantu 910 channel. के chapter 1 हो चुका है, you can see that. High electron affinity. What is electron affinity? Affection towards electron, love towards electron. So if I talk about any atom which has affection towards electron, so whenever electron affinity is, when the electron is gained in that isolated gaseous atom, the amount of energy released is called as electron affinity. मतलब ये इतने अनस्टेबल थे इलेक्ट्रॉन से पहले, दे वर जस्ट मचल रहे थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन मिला हम तो बहुत स्टेबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, बहुत ज्यादा अनस्टेबल थे. ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी स्टेट पे थे. इलेक्ट्रॉन आया, कंबाइन किया, एंड नाउ फ्लोरीन इज लाइक वाह, आई एम स्टेबल नाउ बिकॉज आई एम फॉलोइंग ऑक्टेट रूल. अब मैं स्टेबल हो गया, मतलब मेरी एनर्जी कम है, मैं कम एनर्जी में आराम से हूँ. ठीक है, तो उस स्टेज पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी रिलीज होती है. more and more energy release मतलब more and more stability my atom is having by gaining of that electron. Because it is getting that stability, that means it's having very high electronegativity. यानी कि नॉन मेटल जनरली हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैरी करते हैं बिकॉज दे हैव मोर एंड मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मोर एंड मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मोर एंड मोर एनर्जी रिलीज, यानी कि मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. समझ आया? यानी कि the atom should have high electron affinity also, high tendency to attract electron, and the energy release will be high. The next point is they should have high ionization energy. Very important point students. Ionization energy क्या होती है? Ionization energy is the energy required to remove the electron from the isolated gaseous atom, and that is loosely bound electron. तो अगर सोचो, आपको पता है these are associated with non-metals and they are more of believes in gaining of electron. अब मैं फ्लोरीन को कह रही हूँ जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन गेन करने थे. नाउ यू नीड टू लूज योर इलेक्ट्रॉन, यू नीड टू लूज योर इलेक्ट्रॉन. वो करना चाहेगा स्टूडेंट्स? टेल मी. अगर फ्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, आई होप यू गॉट इट दैट फ्लोरीन डजंट वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन एनीमोर, तो मैं उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लूज करवाऊंगी बहुत ज्यादा एनर्जी देके. फ्लोरीन बेचारा छोटा सा तो साइज है ना, वेरी स्मॉल इन साइज. इफ यू डू रिमेम्बर इट, फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज बिकॉज उसके पास तो 9 प्रोटॉन है, उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन वेरी स्मॉल इन साइज. अब इसको बोलूं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी हाई एनर्जी इज नीडेड टू डू द सेम.
तो जो भी एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे नीड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई एनर्जी नीडेड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, which is generally the case of non-metal. मतलब ma'am is summarizing you, ma'am is summarizing the topic that the elements involved is more of non-metal, means high electronegativity, high electron affinity, and high ionization energy. Very important question for exam point of view. Do mark it. ठीक है बच्चा, आई होप इट इज क्लियर. चेक योर नॉलेज, ट्राई करो जरा जल्दी से स्ट्रक्चर लिखने का H2O का. मैम ने बता दिया है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल नहीं है. किया था क्योंकि ऑक्सीजन इज हैविंग 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज लाइक मैं शेयर करूंगा ना एक एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन इज लाइक तुम भी तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो, आई विल ऑल्सो बी स्टेबल, एंड ऑक्सीजन इज मेकिंग दिस 2 bonds, एक and दो, and then these 2 electron pairs are there on the oxygen. तो ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर and 2 single bond, single covalent bond with hydrogen. ठीक है स्टूडेंट्स, फंडा क्लियर है? डू लेट मी नो. यस, वंडरफुल. तो देखो कितना आसानी से इसमें ये होता है कि एक ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा. ये हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोजन आया, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Hope you're getting it. Ma'am added so many diagrams and gifs also to make this understanding more and more. तो ये अप्रोच करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर. देखो ये आके जुड़ गए. OO with this hydrogen, hydrogen with this oxygen. Okay? By sharing of electron. That's awesome. है ना? Wonderful. अब प्रॉपर्टी क्या है इस कोवेलेंट कंपाउंड की? यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड, polar covalent and non-polar covalent. प्रॉपर्टी क्या है? दे आर volatile with low melting and boiling point. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? why they have low melting and boiling point? Because they have a very weak force of attraction between its other. Okay, they have a very weak force of attraction. अब क्लोरीन में बात करती हूँ एक सॉल्वेंट की, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड. मेरे पास एक सॉल्वेंट है, कैसे एसोसिएटेड होगा? विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग. कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ, मेकिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ये एक CCl4 का मॉलिक्यूल था, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, ऐसे बहुत, मैंने एक पूरा का पूरा कंटेनर ले लिया, तो सारे के सारे कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं एंड आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. बट व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, डिफरेंट CCl4 के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट माइट बी वेरी वीक, क्योंकि ये सब एसोसिएटेड है ऑलरेडी. तो एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे को होल्ड किए हुए है, मोर ऑफ वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत वीक होती है. अब मैं उसको हीट करूंगी, ये आसानी से ओवरकम हो सकती है. अगर ये आसानी से ओवरकम हो सकती है, मतलब दे कैन इजिली कन्वर्ट इनटू gases, so they are more of volatile in nature. These kind of a liquids, more and more volatile, can easily convert to vapors. So I hope this statement is clear now, that they are volatile, very much volatile, can easily convert into vapor. बहुत कम energy चाहिए to convert them into vapors. Means they have low melting and boiling point. Yeah, clear है? That they have very weak intermolecular force of attraction between its molecules. So that's why they exist in more of like gas or liquid, और बहुत कम solid, and that too soft solid, because of having a weak force of attraction between its molecules. Okay, so generally gases, some of liquids, and very few solids. All right. Up, they are non-conductor of electricity in solid or molten or aqueous state due to absence of free ions. अगर किसी भी molecule की बात करो, they are not having free ions, so they won't conduct electricity. They don't have free ions, they don't conduct electricity. But if you take the example of HCl and put it in water, you will get a dilute solution of this acid. Now water helps to dissociate the polar covalent compound. अब ये dissociate हो जाएंगे. अब अगर ions formation हो गई, that can conduct electricity. मतलब polar covalent compound जो है, उनका aqueous solution can conduct electricity. Are you getting the point? Non-polar तो बिल्कुल नहीं कर सकते, no separation of ions. Polar कर सकते हैं in the aqueous solution.
because water helps to dissociate them into प्रॉपर आयंस. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक कर देता है. ठीक है, क्लियर. सॉल्युबिलिटी सेम, इट्स लाइक डिसॉल्व, लाइक व्हाटएवर द नेचर ऑफ सब्सटेंस वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है. डू बिलीव इन द स्टेटमेंट कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व. लाइक तुम्हारा जो ग्रुप है दोस्तों का, दे माइट हैव समथिंग इन कॉमन के चलो कुछ तो एक जैसा, दैट्स व्हाई वी आर गुड फ्रेंड्स. So same with that, polar covalent compounds are soluble in polar covalent and non-polar is soluble in non-polar solvent. Okay, तो HCl की बात करूं, HCl is a polar solvent. HCl can combine with water easily because both are polar in nature. Polar easily can combine. ठीक है. Non-polar की एग्जाम्पल की बात करूं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट्स अ non-polar. ये कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज वाटर इज पोलर. सेम काइंड ऑफ अ नेचर इट शुड बी देयर. बेंजीन को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हो. बेंजीन C6H6, बेंजीन इज आल्सो नॉन पोलर इन नेचर. इट्स लाइक दिस, प्लेन है उसके अंदर सिमेट्री है, इट्स मोर ऑफ नॉन पोलर इन नेचर, एक ही प्लेन में. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है. तो आई होप यू आर गेटिंग इट कि जैसे ही वाटर में डालोगे इट कैन डिसोसिएट इनटू आयंस. ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ. अब ये जो वाटर है ये हेल्प करेगा, ये जो वाटर है ये हेल्प करेगा कि H पॉजिटिव वाज नॉट एट ऑल स्टेबल. ये तो हाइड्रोजन का सिर्फ न्यूक्लियस है. हाइड्रोजन वाज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी लूज करके क्लोरीन के पास चला गया. तो हाइड्रोजन इज ओनली हैविंग न्यूक्लियस, वेरी मच अनस्टेबल. वाटर आके क्या करेगा, उसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा ताकि उसको स्टेबिलिटी दे सके. कुछ इस तरीके से ये वाटर था, ये थोड़ा सा H पॉजिटिव के साथ आके अट्रैक्ट हो गया, डाइपोल इंटरैक्शन, एंड दैट्स हाउ इट इज गिविंग H3O पॉजिटिव आयंस. ये H3O पॉजिटिव कैसे बनता है, we will study that in detail also in the next session about obviously coordinate bonding में इसको डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, और ये क्लोराइड आयन. सो बेसिकली आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डू रिमेंबर इट that polar compound ionize in their solution form and can behave as an electrolyte, means they can conduct electricity. होप सब कुछ क्लियर हुआ ये टॉपिक का. वो टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, वो है a type of covalent bonding due to mutual sharing of electrons. Definitely अभी एक बाकी है, but how would I know that you understood everything? Just tell me these answers. Question के आंसर कि CO2 पोलर है कि नॉन पोलर है, एंड CCl4 इज soluble in water, yes or no? ये क्वेश्चन का आंसर मैम ने ऑलरेडी दे दिया इफ यू आर लिसनिंग टू मैम. और CO2 पोलर है नॉन पोलर, आई टोल्ड यू विल डिसाइड द पोलैरिटी. एरो दिखाओ, सेम डायरेक्शन में जा रहा है एरो, पॉजिटिव से नेगेटिव सबका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स दैट्स अ पोलर. डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है. सो टेल मी, दिस इज योर होमवर्क. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स. और जल्दी से बताओ मैम को कि समझ आ गया. और मैम इस जो सेशन में हमने क्या सीखा, that is covalent bonding and their types in detail. Hope that is super duper clear. Next session में क्या करेंगे students? We will talk about coordinate covalent bonding. Very important topic. Do not miss that session. It's going to be super important. And I hope आप सबने VSAT का एग्जाम दे दिया है. अगर अभी तक नहीं दिया, don't wait for it. It's a Vedantu scholarship admission test. Wait किस बात का है students? Vedantu is such a nice platform to learn amazing things. So at least you should give it a try to give the scholarship. What if you will get a good scholarship of 90, 80% and 100%? Your name can also be there in the list because now the scholarship is about worth 10 crores. और फ्री में टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, घर बैठे आराम से दो. ठीक है, तो अभी इस लिस्ट में सिद्धार्थ, नितिश एंड हिमांशु टॉप पे है. Your name can also be there to get the 190-80% scholarship and can be a part of Vedantu and be a proud Vedan. And pro subscription, जिसने नहीं सुना है, just do enroll for this pro subscription 1 month course right now to know how this platform works, and you can do the number of topics that you want. Okay, cover as much as possible and shine like a star. Okay, we believe in star as you all are star. Do not forget to apply this code, that is AG Anubha Gaur PRO Pro. AG PRO code लगाओगे तो बहुत फायदा होगा. ठीक है,
कैसे करोगे? ग्रेड सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, and every live interactive class and complete curriculum will be there in your list. So my lovely students, समझ आया, मजा आया, फंडा क्लियर हुआ, तो अप्रिशिएट करना तो बनता है, राइट? So just hit the like button, बिल्कुल सिर्फ like button ही करना है, and then subscribe to the channel if you're new here, and do tell it to your friends and share it so that they can also come, और बहुत सारा मेंटी क्विज भी करेंगे और उसमें आपका नाम देखेंगे with all the stars. Okay? Reach out to me at my email ID in case of any queries. So I have had fun in this session. I hope you also have that. Do revise everything. Just see the previous session and come back again. We will come back and with a very high josh and energy in the next session. Till then, please take care of yourself. Stay happy and stay at home. Bye bye.